Okay, so here is this chart now. So we were talking on the action filters, right? So action filter. So how do we apply it? You just have to click on this icon and the chart will start acting like a filter. And you can make any chart work like an action filter. Say for example, I select this pie chart and I select over here this. Now if I select female, all the charts will have now the data for females only. Okay, and the action filters also work in, if you want to apply multiple action filters over here. So what I mean by that is, like for example, if I click on Scotland and then I click on males, so the charts have been updated Scotland in males. I mean male in Scotland, right? So the chart is showing the analysis for that. If I select female, so it is showing the analysis for the females in Scotland. So this is how a person can actually very easily interact and play with the report. And similarly, like this was a shortcut way of doing it. Now I will show you the detailed way of doing this. So if you click on dashboard, over here you will find an option of actions. Okay, so just click on that. So from here, see, I have applied two action filters, so I can see both of them being applied from there. So if you want to remove it, I can remove them from here itself. I'll select the filter and I can remove them. So now if you will see, the action filters are not applied. If I click somewhere, nothing will happen. Can you repeat it? You have to click on dashboard, actions. You will find the actions over there. If you want to remove them and remove them. So suppose I'm applying a filter, I'll click on dashboard, actions, so I can remove it from here. You can remove it from there also. So for example, if you apply a filter and you just check it again, it will be removed, right? Otherwise you can remove from here also, dashboard and actions. Okay. Now what I'll be doing is I'll be clicking on dashboard or the actions. Now I will show you how you apply it from here. So you can see add action. You can add action filter from here. So this will open up a detailed menu for you from where you can actually control a lot of things. So first of all, at the top, you will find source sheets. Okay, source sheet means that what you do over here is like which all sheets do you want to work like a filter. So if I say I want that only sheet one should work like a filter, so I just kept sheet one selected. Okay, sheet one was map, so I've kept only map as selected. Then you have target sheets. Target sheet means that which sheet do you want, which sheets do you want, they should be filtered, right? So like for example, if you select anything on the sheet one, all the sheets will be filtered. But for example, what I do is I say, let me do one thing. Let me show you something over here. What I'll do is I'm just adding a new sheet. And in this, what I'm doing is I am adding count of the customers. So these are the total customers the bank has. So let me just format this. I'm calling this as total customers. And what I'll do is I keep its alignment
Uh, See, what I've done is I'm just creating a very small chart over here just for a quick demonstration. So total customers the bank has. Okay, so I've just put up a small chart over here which says how many total customers the bank has. Now what I will be doing is I am clicking on, I'll go to the dashboard, actions. I will add an action filter. Now I'm saying I want to make my sheet 1 to work like a filter, and the effect should happen on all the filters except sheet 6. My sheet 6 should not get filtered. I want to keep this as frozen. Okay, so I click OK and I click OK. See, if I now click on Scotland, oops, so you will notice that all the sheets are getting filtered, but this is not changing. In Scotland, I had 1124 customers. It has not filtered it. But if I go over here in the actions, I will edit this now because this filter is up, this action filter is applied. Let me edit this. Let me add sheet 6 also into it. If I click on this, see now what I will do is if I will be filtering this out, what will happen is this sheet also will be filtered. So it tells me there are total customers in Scotland. So I'm controlling which sheet should be filtered and which not. So please try this out on your systems once. Did anyone of you try that assignment on the drive, on the tableau, the assignments that are placed? Did anyone of you try them? Tried those anyone any of those exercises? So action on. Okay, so what is run action on means? Run action on means that when that filtration should happen. So there are three options that you will see. Okay, so there are three options. One is hover, one is select, and the third one is menu. Now what will happen is, say suppose if you select the option of select. Select means when you click over here, when you select, the filtration will happen, right? So I'm just selecting, clicking on that area. So in that way, that is how the filtration is happening. So Aman, I think you have just not made that chart, make it for the entire view. Okay, make that chart entire view and right click over here and format. So from here, there is an option of alignment. In the alignment, keep it middle center. This option and this option.
Okay, so now I go back to the dashboard actions over here. So edit this. So I was telling you about the run action on. So select is when you click something, right away the filter will happen. One option is menu, right? If you select this option, so by default you will see you will get this option as selected. What this menu option means is that you will have to actually click over here. The moment you will click on this, you will find a small option coming over here, menu option. So when you will click on this menu option, then the filtration will happen, right? So when you click on that, then the filtration will happen. Otherwise, the filtration will not happen. Okay, so you are giving a control that when the filtration should happen. Similarly, there is third option, that is hover. Okay, so when you click on hover, hovering is, like hovering is just like you don't have to click anywhere. You just bring your mouse, filtration will happen over there, right? See, I'm not clicking anywhere. I'm just hovering my mouse. So that will lead to a filtration being happen. Now, similarly, if you will come on the options on that page, you have three options. So these options are basically, these are like telling, these are something that are for clearing the selection. So when you clear the filter, then what should happen? Okay, so clearing the filter means when you remove the filter, then what should happen in that case? One option is show all values, right? When you say show all values, in that case, what will happen is, so let me just keep this option as select, okay, and this as show all values. Now, please, all of you pay attention for 1 minute, then you can try it at your end. So just you have to understand these three options, and you will be able, you can play, you can have any permutation and combination between these three. Now, all values. So that means click OK. So if I'll click on this England, see now the net. Now if I'll press escape, all the charts go blank. So this is what
So after that, I just apply yourself. So that's how it works. Multiple filters as in Like if I give a certain selection, like how I give a different filter for hover, hover over and hover, and for this exclude all, I give a different filter. Is that okay too, right? I mean, see, if you all the options that you have, so what you can do is you can keep the options you can keep it hover, you can keep it the way you want, like exclude all and keep it hover. That's what I'm saying now. If I select a filter and give it a name, like I give create a filter and give it a name hover, hover, and then I change it. I have the option like leave it. I don't have to change. Even if you want to make any other name, you can do that. Yeah, So what I'll now do over here is I'll just say xmap so I get all the values back. Okay, so now like if I just show you something over here. Any questions up till here, anyone? Are you all able to apply the action filters? Okay. So now what I'll do over here is say suppose I add one more dashboard in this. Okay, so if I add another dashboard, now what I'm doing is let me just remove one of the chart from here. Let me remove the jobs classification analysis from here. I'm just removing this chart. So I have just kept the chart these like this. On the dashboard too, what I'm doing is I am keeping this chart as अभी पता है मैं थोड़ी सोची थी okay. I click OK. Now what will click on Scotland? Now if I click on this, then the filter will be applied. It will show me the data for Scotland. See, now this chart is showing me data for Scotland only. And now leave the filter is really useful over here because it has taken me to this. If there are multiple charts, I can analyze them further. So I will not, you press escape and all, so nothing will, it will not take you back over there. Now if I come back to dashboard one again, I click on England and then I say take me to the dashboard 2. So this will filter the data for England over here on this dashboard.
Now there is one feature in the Tableau that is called as storytelling. Okay, so you will find a quick feature over here, storytelling. You know, the storytelling is a feature that is just used for the purpose of presentation. Okay, you will find that option over here, storytelling. So now what you do is, if I click on storytelling, you will see something now opening like this. Let me change this title. I'll call it as bank story. I click on apply and okay. Now in this story, what you can do is you can actually, you know, like it is meant for the purpose of giving some, I will say some presentation and all. So you can add some sections and all. So I can click, I can over on this on a story. I can, okay. Now I will be only be able to drag one thing. So if I bring sheet 2, it will replace it. Okay. So I'll keep sheet 1 over here and I can write a small caption that here we can see that England has highest customer. Okay. So this is what we get, what I've written over here. Similarly, you can add one more page, a blank page. Over here, I'm writing this. So I can write something like bank has similar males and females. Okay. Now what I can do is I can add another page. Over here, probably I can drag sheet 3, right? I can write my analysis. This is the age analysis. Major customers are from now this is just the purpose of this. You can show it. If you make it full screen, you have to present something over here to your manager or to your team. You can very easily navigate over here and you can tell them, okay, this is what we see over here, this is what we see over here. So this is what the purpose of storytelling is. Okay, so shall I move ahead? So can you just once show that how we did that dashboard too? So dashboard 2, I've just added a new dashboard from here. And on that, I've added sheet 5. Add a new Okay. dashboard from, click on this icon and drag the sheet 5 on this. And we have made the filter and changes only on dashboard 2. We did not use dashboard 1, right? So we have made a filter over here. So I say dashboard actions. And I'm saying keeping the on dashboard 1, if I click on sheet 1, so target, right? So target means कि कहाँ पे आपका filtration होना चाहिए. जहाँ पे changes आ सकते हैं. So over there, I have said that change should happen on dashboard 2 on sheet 5. So it will filter dashboard 2 and not the dashboard 1. And then I'm keeping this option as clear. The moment you clear the selection, what should happen? तो जैसे आप clear अपना filter हटाओगे, तो आपका
वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो था, जो फिल्टर आपका पहले वो दिखा रहा था उसको वही दिखाता रहेगा वो आपको। Okay, sir. Thank you. Okay, shall I move ahead if you have tried it? Okay, so the next thing that we will be seeing over here is, so this is what we have on the action filters and creating a complete report. So you can all save this file. So did anyone try creating the parameter on the age filter, the age chart that we created? Did anyone of you tried that? Okay, so now what we will be doing over here is, so you can just save this to W public, so it will just replace it. So all of you can open up a new Tableau workbook. Just open up a new one so that we can start fresh on that. So now over here, what we will be doing is we will be connecting to the data file that is sample superstore, the file that you all would have we used in the previous sessions as well. So we will be working with the sample superstore. Okay, so please bring this sample superstore, the same file orders tab that we used previously. So now what we will be doing on this is, so can you all create a chart?
would like to see the top 5 products by sales. I just want to see the top 5 products by sales. See, now if you want to show the top 5 products, how will you do it? Anyone, any idea on this? So what we will do is we will create a chart first of all, product name. I am adding all the members and I will show a sales. So I can see which product had how much sales that had happened. I will sort this data in the descending order. So I can see the complete data now in the descending order here. So can I see the top 5 products from here? Can I see the top 5 products? Miss Class, can you identify the top 5 products over here? Right, the first 5 that we will have, they will be the top 5 products that we will be having. Now, but my objective is that I only want to see the top 5, not the other ones. So how we will see the top 5 products over here is, I will be applying a filter on this. So I will bring product name, right? I will bring the product name into the filter. And I will say, you see there is an option of top. So I will say, I want to see top 5 by sales. So if I'll hit on apply and OK, it will only show me the top 5 products and not the other ones. So this is how you can see the top 5 products if you want. And similarly, you also have the option of bottom 5 as well. So if you edit the filter from here, so in the top, like you had an option of top, you have a bottom also. If you will say bottom 5, it will show you the last 5 products. So the lowest sale happened on these 5 products. But right now I will like to keep it as top. Sir, can you just once show how to apply that means मतलब आई एम नॉट गेटिंग मतलब मेरी जो आ रही है तो टॉप 5 दिखा रहा है बट ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है सो कैन यू जस्ट शो दिस So from here, you can either click over here on the side, do it from here also. Okay. So now, like yesterday we discussed the concept of parameters. Now what I will do is, all of you, can you create a parameter over here? If you can just create a quick parameter. And in the parameter, I should be allowed to in the parameter, I should be allowed to enter only the values from 1 to 10. And please all of you make that parameter. So in the parameter, user should be allowed to add only the values 1 to 10. So what I will do is, I click on create parameter. I'll call it as top n. I am saying a person should only be able to enter a value within the range of 1 to 10.
So this is how I have created the filter. So if you remember from the yesterday, when we work on the filter parameters, there are 3 steps that we follow. So you create the parameter, you then show the parameter, and then you assign the parameter, right? So I am creating the parameter. There it is. When you right click on this, you will be able to show the parameter. So there it is. I can see the parameter and I can only enter. I think, I chose the value as floating. Let me change it into integer. So now I can only enter integer values over here from 1 to 10. Now what I want to do is I need to assign it to my filter. So what I will do is I'll come to my filter, edit filter, where I had manually entered 5. Over here I will say top n. I will be able to see my parameter over here. Now the benefit of this is if a user wants to see top 2 products, he can see it. If he wants to see top 5, he can see it. If he wants to see top 7, top 8, top 10, so he will be able to see it up till top 10. So he can see the top 10 products as per his requirement. Now you are able to create this. Can you create a dynamic title that what should happen is top, whatever number I'm selecting, it should show me that top products. So if I select 5, it should tell me top 5 products. If I want to see 10, if I select 10, it should show me top 10 products. So how will I get that thing? I will click on insert and you will find the parameter over there. So if you hit on apply, now you have a dynamic title as well. So if you select 6, it shows you top 6 products. If you select 4, it shows you top 4 products. Likewise. So now the next thing that we will be seeing over here is that would be groups. Okay, the next thing that we will try on this is that is the groups, or I will call it as grouping of data. So basically, what is grouping of data? So it's a very simple the objective. Now if I create a small quick chart over here. Okay, now if I am saying I have some subcategories, I put them into the rows and I have the sales for them. So if I showcase the sales for them, okay, so I'm sorting them in the descending order. So if you see, I have 17, I can see 17 marks. That means I have 17 subcategories with me. Now somehow I feel that I mean like tables and chairs, right? You see over here you have we do not have the, if you see tables and chairs, right?
These are coming as two separate subcategories. Now I feel that table and chairs are something that are always purchased together. If someone will come to buy a table, he will also buy a chair, and likewise, if someone will buy a chair, he will also buy a table. So I do not want to show them as two different subcategories over here, but I want to show them as one. I want to show it as tables and chairs. So if I ask you guys from the data perspective, how will you get that change done? How will you make that thing happening? Yes, anyone? If I want to see tables and chairs as one, so what change you will have to make in the data? So can you just repeat the question because your voice was breaking? So the question is, if you see, have you made this chart, tables and chairs? So I have brought all the subcategories over here. So what I want is that tables and chairs are coming as two different subcategories, but I want to see them as one. I want to see table and chair as one. Yeah, so sort of that is the question that I want to group it into one category, but how will you do it? So I'm trying to understand what will be the approach in order to get that. Samir, you're saying user input of chairs to table ratio and then group them. I didn't get it. See, understand the data, right? You have to see the data once, understand the question. Okay, these are the things that you have to be, you have to, data is the main thing, right? Because this is the industry data analytics. So we all should be very much well versed in terms of understanding the data first. Only then we can go ahead with any analysis or any business solution that is required. So if I open up that file for you, okay, so the file was sample superstore. So this is what the file is. And this is the exact same data that comes into your Tableau as well. Okay, you get the same data that gets imported into the Tableau. So how will I make that change? No answers? See, if you say over here, if I have the subcategories, right? Let me filter out my question, the thing over here. So this is the chairs and tables. Okay. Because I have chairs as a separate category, table is a separate category. So that is the reason I'm getting two values in my data also. But if I just replace everywhere this table and chair as chairs and tables, okay,
Now, don't you think if I'll bring this data, I will get only one category, chairs and tables? Now, if I will load this data in my Tableau, now will I get one category or two categories? One, right? But is it a good approach? Is this a good approach? So, Aman, why not? Why is it not a good approach? Generalization, what do you mean by that? So if let's suppose अगर आप चेयर और टेबल कह रहे हो उसकी हाँ, जगह किसी और चीज को मर्ज करने को कहा जाए तो हर बार मैं डेटा सेट में या फिर मेरी एक्सेल में आके चेंजेस थोड़ी करूंगा. I have to do it in the software only. So it's not no, basically it's not feasible. It's not a feasible approach that I will be making changes every time in the Excel. no, but that is not the right answer, right? So this is something like we are talking more in the context कि हमारे लिए uncomfortable हो रहा है, right? That is the option that you are giving me कि ये हमारे लिए uncomfortable हो जाएगा कि मैं बार-बार आके change करूं और अपने data को update करूं. But that is not the right answer. The right answer is basically the reason I cannot make a change over here is क्योंकि this is my raw data. ये मेरा original data है मेरे पास. अगर मैं इसके अंदर change करता हूं तो मेरा data कहीं ना कहीं original data को मैंने change कर दिया आपने. और कल को अगर मुझे अपना ओरिजिनल डेटा देखना होगा तो आई विल नॉट हैव एनीथिंग विद मी टू रेफर बैक टू. अगर मैं इसी डेटा के ऊपर चेंजेस करता रहूंगा, कुछ ना कुछ अपनी कैटेगरीज को चेंज कर रहा हूँ, कभी कुछ चेंज कर रहा हूँ, सो आई विल एंड अप changing my original data at the first place, the file that I received, and it can be very difficult for me to retrieve that data back if I do not remember what exactly changes that I made. So that is why आप किसी भी टूल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी काम करते हो तो आप कभी भी अपने ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करते. दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल दैट वी ऑल शुड नो कि हम कभी अपने ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई नहीं करेंगे. अगर आप अपने डेटा को आर में या पाइथन में या एस में या टैबलो में कहीं पे भी इंपोर्ट करते थे तो आप क्या करते थे, उस डेटा को उस सॉफ्टवेयर में लाके उसको मॉडिफाई करते थे. उसका रीजन ये, the reason was not feasibility, it is we want to keep the original data to be as intact. क्योंकि जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे यू विल हैव मिलियंस ऑफ रोज ओवर देयर, और अगर आपने मिलियंस ऑफ रोज को कहीं ना कहीं अगर आपने चेंज कर दिया so it will be very difficult for any person to get that data back. Okay, so this is the most important reason that you have to keep in mind, and this is something that is also asked a lot in the interviews as well. Now, so as we discuss, I will not make a change over here. So rather what I will be doing is, I will go back to my tablet. Okay, just give me a second, guys. Let me plug in the charger. Okay, so what I will do is, I want to club chair and table together. So what is that? That is the subcategory. Just right click on that and create a group. So you will find an option of group over there. So from that group, you have to select two of the items. One will be chairs. Then press Control on your keyboard and then select tables. Okay, because you have to select multiple items. तो पहले आप chairs को select करो और उसके बाद Control press करके अपना tables को select कर लो, so that you can select the two items together. Once you select them, then click on group.
तो वो दोनों आपका ग्रुप होकर एक नई कैटेगरी बन जाएंगे, चेयर्स एंड टेबल्स। अगर आपको उसको रीनेम करना है, कुछ और नाम देना है, तो आप यहाँ से उसको रीनेम भी कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू कीप इट एज सेम, यू कैन कीप इट द वे इट इज। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, यू विल बी देयर। तो आपका फील्ड बन जाएगा नया। तो अब देखो, तो नया फील्ड बन रहा है आपका यहाँ पे। जैसे बिन्स में नया फील्ड बना था, वैसे ही ग्रुपिंग में नया फील्ड बनेगा। तो इस नए वाले फील्ड को आप इस चार्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। So you can see, you will find over here a new field to be created, subcategory group. So I'll bring this field over here. So now if I sort it again, तो अब देखो चेयर्स एंड टेबल्स दोनों की सेल आपकी सम होकर एक साथ आ रही है। चेयर्स एंड टेबल, तो आप देखोगे इसकी सेल बढ़ गई है। तो इसमें चेयर्स और टेबल्स दोनों की सेल्स एड अप हो गई है। So can you just show once means after that how to apply it? I'm not my table is it's not getting adding up. I mean, can you see a new field created, subcategory group? Yes, so that I created a new category by the name of chair and tables, and You just have to bring that new field over here in the rows. अपने पुराने वाले फील्ड को रिप्लेस करके यहाँ पे जो नया फील्ड लेकर आया उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो बस यहाँ पे। तो जो नया फील्ड आएगा उसके अंदर वो चेयर्स एंड टेबल्स को ग्रुप करके लाएगा ऑटोमेटिकली। okay. Okay, class. So I think we can all take a 10 minutes of a break over here, and we'll start at 6:25. Okay.
Hello. Yeah. Hi, class. Shall we start? Sir, hello, hello. No, say. Yeah. सर आपने जो शीट 1 थी ना सर उसमें यू हैव मेड अ चेंज जिसमें व्हेन जब हम ये टॉप 3 चेंज कर रहे थे तो मतलब व्हेन जब अपन ये इसमें से पैरामीटर चेंज करेंगे तो वो नाम भी चेंज हो रहा है शीट का. सो कैन यू Yes. जस्ट शो दैट वन? तो यहाँ पे आपको जहाँ पे वो डालना है नंबर, तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको उसका पैरामीटर का नाम आ जाएगा. यहाँ पे पैरामीटर्स डॉट टॉप पे जस्ट सिलेक्ट दैट, ओके तो अपना वहां से पिक कर लीजिए. ओके थैंक यू सर. So now the next thing that we will be seeing over here is that is a little bit advanced feature of groups, and that is called as set. Okay, so we will be seeing how do we create this. Now let me just give you let me ask you a quick question over here. Okay, so what I would like to do is, say suppose uh, I make the chart. Let me show you what. Yeah, so let me create the same chart subcategory. I'll make the sub. So Sunny, you have a question. Can we group measures? So you can group dimensions or measure whatever you want. So you can group them. So if you see over here on the measures, so you can create a group over here as well, right? So what will happen is you will get all the values. So whatever you want to show them as one, so you can pick that value and group them together. But generally what we do is grouping is something that we do on the dimensions only. I mean, you are saying you want to merge this and this, but what will you get out of this if you just merge these two together? I mean, what are you exactly trying to showcase? If you can just give me a little idea, maybe there could be something Can you else. hear me? Yes, I can hear you. So in examples where we are looking at measures where there could be elements of cost which are defined together as separate heads, like you've shown discount and profit and quantity, it could have been list of different amount of costs which I would want to club them together into a singular value. Like for example, if this is for the data that I have, okay, so now you can see over here, so I have the sales discount profit over here. So what do you want to show now? Let's say the discount was of 3 types. One was a discount which was given on the product, the other was on something else, and I want to have a total discount column which was passed on. And I would want to add all the discount fields together. Now in this data set, of course, there is no multiple discounts here, but I'm assuming a scenario instead of the quantity, there was a second type of discount, which was a volume discount or anything which was an added value of cost. You just try to add it. Say suppose I add discount 2 over here. Okay. Yeah. Now say suppose Let it be let me 50% of the discount column. I mean, just from a calculation perspective. So if you can just multiply that by 50% or whatever.
No, so basically this is something that you're talking about. This is not grouping. This is a calculation, right? Say suppose this is the sales amount, right? So if I Yeah. give, this is the sales amount. So if I give a 10% discount on this, what will I, Yeah. what I will be left with is I will be like 10% discount. That means 26 rupees will be subtracted. So the value that will come up is equals to 0.9 multiplied by this sales amount. So I will be left, this is the sales amount that I had to pay. Now on top of this, say suppose there was another discount that I had to give that was of further 10%. So now it will become equals to 0.9 again of whatever is the amount that is left of. So you are now, you have to pay final amount of 235 rupees or 212 rupees. So this is a Right. calculation. So this is a calculation. So this is not grouping. That how we No, want but the in this calculation case, to happen. so in the same example that you just now took, let's say there were two discounts which were passed on. One was showing from 261 to 235, which was the first level of discount, let's say discount 1. And then Uh-huh. from 235 to 212, which was discount 2. Now, that is now as two separate columns in my data set, discount 1 and discount 2. And No, but if from you a see this, Tableau perspective, no, this is something a different scenario, right? If you say discount yeah, one, yeah, discount one was 10% and right, discount two was 10%, right? right. So one thing that you are asking me is that you add up the discount and then you apply it over here, correct? So you I'm are simply saying, asking you if you can add up discount 1 and discount 2 together at the Tableau level. If I were to तो just वो तो add up the two आपका discounts. तो वो तो आपका कैलकुलेशन बन गया ना आपका, आप यहाँ पे सीधा एक कैलकुलेट फील्ड बन जाएगा आपका डिस्काउंट 3 फाइनल डिस्काउंट के नाम से, आप बोलोगे फाइनल डिस्काउंट 3 और वो क्या है आपका, दैट इज जस्ट अ समेशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर, तो आपका सम हो गया ना, 20 मिल गया आपको, सीधा सम करके आपका कैलकुलेट फील्ड बन जाएगा उस केस में. Okay. Okay, that happens in the case of a measure where I'm able to pull up a calculated field. But जहाँ हाँ, पे dimensions हैं वहाँ पे सो डायमेंशंस में आपके पास आपको एग्जैक्टली मुझे आप एग्जांपल दो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट. ये आपके पास like in the कैटेगरी दी हुई है, category, आपको सब अब जैसे कैटेगरी दी हुई category है, और subcategory है. If I ठीक were है. to plug all of it together to say as a single product, as all of it together in one place. मतलब आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट का नाम तीनों एक साथ देखना है, हाँ, तो वो भी आपका कॉन्कैटिनेशन फील्ड है, आपको सिर्फ कॉन्कैटिनेट करना है उसको, डेटा को इक्वल टू कॉन्कैटिनेट आपकी ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू, दैट इज अ कॉन्कैटिनेशन द कैटेगरी. See, basically what you are trying to achieve is, maybe I'm not sure that this is the answer that you are looking out for. So something that I can show you over here is that you can do is you can create a hierarchy in this. Okay, so let me add a new sheet. So what I will do over here is we have an option of hierarchy in this. So now if you see what is a hierarchy, hierarchy क्या होता है आपका, basically एक एसोसिएट है, एसोसिएट का एक टीम लीड होगा, टीम लीड के ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर और उसके ऊपर एवीपी सीईओ, ये आपकी हायरार्की होती है. तो यहाँ पे अगर आप right, देखो तो कैटेगरी टॉप लेवल है, फिर सब कैटेगरी है और उसके नीचे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है. ठीक है, ये आपकी हायरार्की बन गई एक, जिसमें 3 लेवल है मेरे पास. सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल सिंपली ड्रैग सब कैटेगरी ऑन द कैटेगरी. मैंने उसको ड्रैग किया तो देखो मेरी हायरार्की बन जाएगी यहाँ पे, कैटेगरी सब कैटेगरी के नाम से. तो यहाँ पे आपका एक सेक्शन बन गया हिरार्की का. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास. अब मैं क्या करूंगा, इसी हिरार्की के अंदर प्रोडक्ट नेम को भी ले आता हूँ. सो आई ब्रिंग दिस ओवर हियर एज वेल. अब ये तीनों का एक लेवल बन गया मेरा, कि सबसे ऊपर कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी और फिर प्रोडक्ट नेम है. अब इसका right. एडवांटेज क्या है मेरे पास, अब मैं इस हिरार्की को यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी सेल्स को शो कर देता हूँ. ठीक है, Right. अब टॉप लेवल मेरा कैटेगरी था, तो सबसे ऊपर मेरे को कैटेगरी दिख रहा है. लेकिन इस चार्ट के अंदर एक बेनिफिट है कि अगर मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो उस कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरीज आ रही है, मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे. Correct. कि इस फर्नीचर में ये सब कैटेगरीज हैं, ऑफिस सप्लाईज में ये सब कैटेगरीज हैं, टेक्नोलॉजीज में ये है. वर यू ट्राइंग टू लुक आउट फॉर दिस थिंग? Yeah. This is exactly what I was thinking. Yeah. या सो उसको आप हिरार्की से क्रिएट करते हो. आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी हिरार्की बिल्ड हो जाएगी. और फिर आपके पास देखो यहाँ प्लस का साइन आएगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, और ऊपर आएगा माइनस का साइन तो उससे कोलैप्स हो जाएगा. Right. Got it.
Okay. So now I was talking about the set over here. Okay? So now what exactly is set? So let me show you. What I will do is I will make a chart over here where I am showing the subcategory and I will show the sales. Okay, so I will have the sales over here. So let me just inverse them ताकि वही same chart मेरे पास आ जाए. Okay. So now let me ask all of you a quick question. Now what I want to achieve on this chart is that tables and chairs, right? These two were the categories जिसको हमने पिछले इस example में क्या किया था, merge कर एक same category बना दिया था, एक single category बना दिया था. I was getting table and chairs to be as one. But now what my goal is that I do not want to club them together. मुझे इन दोनों को tables और chairs को club नहीं करना है. But मेरे चार्ट के ऊपर कुछ मैं ऐसा करूं कि अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो मुझे समझ में आ जाए कि यार ये टेबल और जो चेयर हैं दे बिलोंग टू सेम टाइप ऑफ कैटेगरी. तो नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे क्या करना है, दोनों को नहीं करना है, ये चार्ट जैसा है वैसा ही रहे. लेकिन जब मैं इस चार्ट को देखूं तो चार्ट को देखते ही मुझे समझ में आ जाए कि यार ये दोनों सेम सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. They are kind of similar group. So what do you think from the representation perspective that something that can be shown? So don't think from the tableau perspective. Just tell me from that layman's perspective कि अगर मैं आपको उस टाइप का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार टेबल्स और चेयर्स एक ही हैं. I'll report them, right? So like what I can do is अगर मैं चेयर और टेबल्स को सेम कलर दे दूं कि चेयर भी रेड कलर का कर दूं और टेबल्स भी सेम कलर का रेड कलर का कर दूं, so will it give you an idea कि यार ये टेबल्स और चेयर सेम है, right? That will give you that information, right? So what I will do is I will bring my subcategory. मैंने उसको डाल दिया कलर पे, ठीक है. अब जैसे आप इसको कलर पे डालोगे तो सारे बार का कलर चेंज हो जाएगा. तो आपको मैन्युअली जाके वो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी. यू विल गो टू द कलर, एडिट द कलर्स एंड पहले आप क्या करोगे, सारे का सबका कलर कर दोगे ब्लू, राइट? यू विल मेक ऑल ऑफ देम ब्लू. फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है टेबल्स को और चेयर्स को, टेबल्स को मैंने कर दिया रेड और चेयर्स को रेड कर दिया और इसी तरीके से टेबल्स को भी रेड कर दिया. नाउ इफ आई हिट ऑन अप्लाई एंड ओके, सो नाउ इफ यू टेक अ लुक एट दिस चार्ट, सिर्फ मैंने कलर कोडिंग कर दिया और कुछ भी नहीं किया. दोनों रेड हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट आई विल गेट एन इंप्रेशन ओवर हियर, राइट गाइस? So now, but definitely जो ये मैंने टास्क किया है that was the tedious one, right? इस चीज ये काम करना मेरे लिए थोड़ा tedious था कि पहले कलर फिल डाला उसके ऊपर और फिर सबका कलर चेंज किया और इसको सेम कलर का किया. So in order to overcome this thing, we have a concept that is called as set. Now this set is very interesting and it's very easy to learn as well. So now let me show you what I will do. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मेरा फील्ड था सब कैटेगरी. I will right click on my subcategory, right click on the subcategory, create set. पहले ग्रुप का ऑप्शन था, उसी के नीचे सेट का ऑप्शन है. अब सेट के ऑप्शन में आके आप सिलेक्ट कर लो कि मुझे चेयर्स और टेबल्स ये दोनों एक साथ यूज करने हैं. तो आपको ग्रुप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आप चेक कर रहे हो. तो इसका आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन लुक्स लाइक वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैड इन द filter. So I have just selected chairs and tables. I'll click on OK. So over here you will see कि आप लोगों का एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है सब कैटेगरी सेट. ओके, यू हैव अ सब कैटेगरी सेट, एक नया फील्ड क्रिएट हो गया. नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस इज, मैंने कलर से सब कैटेगरी को हटा दिया, प्लेन कलर हो गए सारे के सारे ब्लू. अगर मैं इस सेट को कलर पे लेके आता हूं तो ये आपको क्या दे देगा, जो इनसाइड द सेट है, जो वैल्यूज मैंने सेट में रखी हुई हैं वो ब्लू हो गई, बाकी सारी ग्रे हो गई, राइट? तो इन दोनों का कलर सेम आ रहा है, बाकी सबका कलर डिफरेंट आ रहा है. इफ यू वांट टू चेंज कलर, कलर पे क्लिक करो
एडिट द कलर्स करो, और जो कलर जिसका जो करना है आप कर सकते हो अपने हिसाब से. यू कैन मॉडिफाई द कलर्स एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. Okay, class, please try this out. Let me know if you have any questions. Yeah, Vishay, you can make multiple sets, and I will be coming to that. Just show you that how do you create that and what will be their main usage as well. So just showing you a small quick example over here. See guys, this is just a general observation that I had while training you guys. So, I don't see a lot of participation and interactiveness or very healthy questions also that being asked over here. There are very few, who are actually asking some very good questions and healthy questions over here. So I'm not sure what is missing, but just a point of note, right? Because almost all your courses are done, right? So, and you have spent almost like 7 to 8 months as well, right? So I feel that I think you all need to just buckle it up, right? You need to start practicing more. You need to be deep dived into all the things that you are doing over here, because this is all the things that you are doing it for your own career, right? You have spent your time, your energies, everything, right? Spent a lot of money, energy, and time, everything. So just a word of, a caution for all of you. Please start preparing, revising, and start reading the blogs of for analytics. Start doing more and more practice on all the things. Because if you would have noticed, the things in all the tools are the same. Just that features are changing, but the main objective, the underlying thing, data, that remains the same. And that is the only thing that has to be used across the different softwares. Okay, so are you all able to create this chart? Sure. So I'll just make this chart again. So what I'll do is I will delete the set that I have created. So I've deleted the set. Do is first of all create this chart. Right. So do you all have this chart with you right now? Subcategory and the sales. Okay. So now in this, what I will be doing over here is I just need to first of all create my set on the subcategory. So right click on the subcategory, click on create set. Okay. Just create this. So you will get an option. It is saying create set over here. You see there are some options also: general, condition, top. So these are the same options that you have in the filters. I will say I want to keep chairs and tables inside the set. Now, please select the two values. Done. Have you selected these two values over here?
Click OK, and you will find the set being created. Just put the set on the color. That's it. Okay. Now create a new chart over here. All of you have to create a scatter plot. Scatter plot to show sales versus profit. So create a scatter plot over here now, where I would like to see sales versus profit. So sales versus profit, sales versus profit for customers. Okay, I would like to see what was the sales and profit that was given to me by different customers. So how we will create it? Anyone? So I will pick up the sales, put it into the columns. I will pick up the profit. I will put it up into the rows. Right. So Sumi, you've done it. Perfect. So what I'll now do is I just need to bring customer ID into the detail. So here the chart is ready. So I can see this customer over here, the customer ID. So we have the customer name also. Let's bring customer name rather, right? So let us bring the customer name for now. Oops, not on the color, on the detail. So the same information. So I can now see the names. So there is a customer whose name is Tamara Chand, right? So this customer has given me high sales and high profit, right? As I go on the right hand side, my sales are increasing. As I'm going up, my profit is increasing. So I can see this customer has given me this much sales and this much profit. Similarly, if I talk of this customer, although this customer has given me high sales, but the profit is very low, right? I mean, profit is actually negative. He has actually given me loss over here. So this customer, although despite giving the sales, is not at all profitable for me. Now what I would like to do is on this chart, I just want to highlight those customers. Okay, I would like to highlight those customers who have given me sales more than 10,000. Okay, I want to highlight those customers who have given me the sales more than 10,000. So typically these are the customers who have given me the sales more than 10,000, correct? Because this is the axis of 10,000. All the customers who are lying on the right hand side of this 10,000, they are the customers who have given me sales more than this. Do you all agree? Okay. So now in order to do that activity, I can again use my set over here. So what I will be doing is I want to highlight the customers who have given me the sale more than 10,000. So I'll go to my customer name because on the chart I'm using customer name. So I will right click on customer name and I will say create a set. First of all, please watch it and then you can do it on your systems. Just follow the step. Everything is same. The things that you have done in the previous chart, the same thing I will be repeating over here. So right click on the customer name, create a set. Now I will have to create a set on the base of a condition. Okay, so what is my condition? I want to see those customers who have given me sales. See, it is normal English, the way it is written. My condition is I want to see the customer name who have given me sum of sales, who have given me total sales more than 10,000. I'll hit OK. I can see the set is created.
Now what I will do is I will bring this set on the color. So do you see the customers who are in blue, they are inside my set. That means these are those customers who have given me sale more than 10,000, and the gray ones are those who have given me sale less than 10,000. So this is the same thing that is represented over here with the help of set over here. Okay, so now you can all try it at your end. So the chart is ready. You all have to just right click on the customer name, create a set, and put down a condition. Are you able to create it? Vislas, done. I mean, you do not want to show the data for Sean Miller. So what you can do is you can apply a filter in that case. Simply bring the customer name over here, and right now it is showing all the customers, and select the Sean Miller over here. Right, you say you do not want to see it. That's it. Apply and OK. So that customer will not be visible over here. So I just filtered it out. Okay. So now all of you please. So can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. So I want to know that this guy, the sales is high, but he is not giving me any profit. That guy, the name of that person is Sean Miller. So out of this, I want to see the people who have given me sales more than. Okay. I want to create it. Just I wanted to exclude this guy, Sean Miller. Will it be possible to use a couple of filters here? But if I want to just exclude this one person. तो वो वही तो filter लगाया मैंने अभी आपके लिए, जो customer नहीं name का sir. filter लगाया मैंने. हाँ. मतलब I can get the sales जो है मेरी, मतलब जिनका मतलब sales भी ज़्यादा है, but sales is more than 10,000 and they are giving me a profit. But this one guy was not. So that's what I wanted to know. No, I'm not able to get your question. So yeah, this is the customer that you have. This guy is not giving me profit. Sales है मेरी 25,000, ठीक है. मैं चाहता हूँ जो ऐसे लोग हैं जो who are giving me जिनकी sales 10,000 से ज़्यादा है, but they are giving me a profit. Loss. I mean, you are talking of loss over here. जिनकी सेल अच्छी है, but वो आपको लॉस दे रहे हैं. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो प्रॉफिट दे रहे हैं. अभी शॉन मिलर तो लॉस दे रहा है ना आपको, पर शॉन मिलर तो लॉस दे रहा है ना मेरे को, प्रॉफिट उसका नेगेटिव है. हेलो. या सो मोहसिन, तो
Yeah, I can hear you. एक्चुअली सर पता नहीं क्या हो रहा है, लैपटॉप से भी कनेक्ट नहीं हो रहा था. जस्ट गिव मी अ सेकंड. कैन यू हियर मी नाउ सर? Yeah, I can hear you. Okay, so I'm saying that this guy Sean Miller, he is not giving me a profit. ठीक है. और there is one more guy, this guy, Becky Martin, just to the left, just one this. Yes. ये जो दो हैं, they are not giving, इनकी सेल्स जो है 10,000 से ज्यादा है, but they are not giving me a profit. So मैं ये चाह रहा हूँ कि ये can this kind of a filter, कि मतलब जो लोग मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं एंड सेल्स 10,000 से ज्यादा भी है, can we get that kind of a filter? Yes, you can do it. So basically not filter, we can use the set only. आपका क्वेश्चन था बेसिकली, आपको जब आप फिल्टर बोलते हो, फिल्टर का मतलब होता है कि उस चीज को हटा देना, राइट? आई थिंक योर क्वेश्चन वाज कि आप उन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हो कि जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है बट उनका प्रॉफिट 0 से कम था, राइट? प्रॉफिट अगर 0 से कम है तो मतलब लॉस हो गया. नहीं सर, आई वांट उन लोगों का जिनका जो मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं, सेल्स 10,000 से ज्यादा है एंड दे आर गिविंग मी अ प्रॉफिट आल्सो. हाँ, दोनों चीजें हो गई ना उसकी, दोनों चीजें हो गई ना आपकी. अब ये दोनों आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, ये दोनों आपको लॉस दे रहे हैं. वही मैं कह रहा हूँ सर, मुझे इनको इंक्लूड नहीं करना है. बाकी जो कस्टमर्स हैं जो मुझे 10,000 से ज्यादा की सेल्स दे रहे हैं, मुझे सिर्फ उनको हाईलाइट करना है. एक सेकंड. हाँ, अब आपको हाईलाइट कर, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये दो, जो जितनी ये दो बंदे हैं ये ग्रे हो जाए, बाकी ऊपर वाले ब्लू रहें, ये चाहते हो ना आप? यस सर. हाँ, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग अपना नया सेट क्रिएट करो. यहाँ पे जस्ट क्रिएट अ सेट. What that set should do is it should highlight the customers who are giving me profit more than 4,000. Now create a set. All of you create a set that should highlight the customers who are giving me profit more than 4,000. Okay, done. So I will follow the same steps. Customer name पे मैंने right click किया. I will create a new set. Now what I will do is I will call it as customer name. इसको थोड़ा generic सा नाम दे देते हैं. Profit more than 4,000. ठीक है. अब मैं इस वाले सेट को लेकर आता हूँ कलर पे. सो कुछ कलर चला गया क्या मेरा उस सेट में? this. Sorry. So I want to have sales more than 4,000. Right? Sorry यार, फिर sales नहीं profit था. Profit more than 4,000. ठीक है. अब हुए मेरे हाईलाइट कस्टमर. यहाँ पे ये वो कस्टमर है जिनका मेरा प्रॉफिट, इन्होंने मुझे प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स. हम यहाँ पे सेल्स को कंसीडर नहीं कर रहे. अब मेरे पास दो सेट है यहाँ पे, राइट? एक सेट वो है जिसमें मैंने सेल्स को रखा हुआ है और एक सेट वो है जिसमें मैंने प्रॉफिट को रखा हुआ है. ठीक है. अब सेट के ऊपर एक कंडीशन होती है कि आप सेट्स को आपस में मर्ज कर सकते हो, राइट? आई हैव टू सेट. तो एक ये सेट था जो हमने क्रिएट किया था जो कि सेल्स वाला था. इसको भी मैं नाम प्रॉपर दे देता हूँ. दिस इज द सेट इन विच वी आर. ये था, वो दूसरा था, वो ये था कस्टमर नेम सेट एडिट कंडीशन. हाँ, तो इसका नाम था कस्टमर नेम सेल्स मोर देन 10,000. तो मैंने इसको ये नाम दे दिया ताकि मेरे लिए इजी हो जाए थोड़ा उसको रिकॉग्नाइज करना. तो आप जब सेट क्रिएट करते हो आप उसको क्या कर सकते हो, आपस में कंबाइन भी कर सकते हो. तो आप इन दोनों में से किसी भी सेट के ऊपर राइट क्लिक करो
just right click on any of the set, you can create a combined set. ठीक है, so just do it, right click करो अपने उसके ऊपर और choose the option of create combined set. तो देखो आप दोनों, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि आपका एक नया सेट बन जाएगा जिसका नाम दिया आपने कंबाइंड सेट. नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, जो मेरा ये सेट है सेल्स वाला, इसको मुझे कंबाइन करना है 4000 वाले के साथ. नाउ इन दिस केस आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, चार ऑप्शंस आपने कहाँ पे देखे हैं? चार ऑप्शंस जो आप नीचे देखते हो यहाँ पे, ये कौन किसी चीज से आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये चीज किसी चीज से मैच करती है या रिलेट करती है? राइट, मर्ज एंड जॉइंस. राइट, तो ये जॉइंस वाली चीज है. ये पहला वाला ऑप्शन क्या है? ये कौन सा जॉइन है? पहला वाला जॉइन कौन सा है? आउटर, बेसिकली फुल आउटर. राइट, फुल जॉइन. आउटर बेसिकली आपके तीन टाइप के होते हैं अमन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर. सो वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक कि कौन से आउटर की बात कर रहे हैं हम लोग. सो दिस इज फुल आउटर जॉइन, जिसमें दोनों सेट्स का डेटा आएगा. इसके अंदर सारा डेटा इसका आएगा और सारा डेटा इसका आएगा, दोनों का डेटा हाईलाइट कर देगा. अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओके, एक नया कंबाइंड सेट बन गया. मैं इसको कलर पे डाल देता हूँ और देखो इसमें सारे वो कस्टमर हाईलाइट हो रहे हैं जिनका सेल 10,000 से ज्यादा है प्लस प्रॉफिट भी 10,000 से ज्यादा है. ठीक है, तो सारे कस्टमर हाईलाइट हो गए वो वाले. एक बार आप इसको देख लेना प्लीज, उसके बाद अपने सिस्टम पे करना. इसी सेट को अभी मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे आके, एडिट सेट. अब मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ. सेकंड का मतलब इनर जॉइन. इनर जॉइन का मतलब ये वो कस्टमर है जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है और प्लस उनका प्रॉफिट भी 4,000 से ज्यादा है, जहां पे दोनों की कंडीशन मीट हो रही है, दोनों में जो कॉमन है डेटा. तो अगर मैं इसको अप्लाई एंड ओके करता हूँ तो देखो सिर्फ ये वाले कस्टमर हाईलाइट हुए आपके. ये वो कस्टमर है जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है प्लस प्रॉफिट भी 4,000 से ज्यादा है. ओके, इसी के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, थर्ड ऑप्शन है आपका लेफ्ट. ये एंटी लेफ्ट होता है बेसिकली. एंटी लेफ्ट मतलब जो डेटा सिर्फ इसमें है बट इसमें नहीं होना चाहिए. यानी मैं उसकी बात कर रहा हूँ उन कस्टमर्स की जिनकी सेल तो 10,000 से ज्यादा थी पर प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा नहीं था. राइट, और इसी तरीके से लास्ट वाले का मतलब है वो कस्टमर जिनका प्रॉफिट तो 4,000 से ज्यादा है बट सेल 10,000 से कम है. राइट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट. तो ये दो वो ज्वाइन है. अब देखो पहले वाले ज्वाइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं डेटा कैसा दिखता है हमारे को. अब देखो इसमें ये वाले कस्टमर आए ही नहीं क्योंकि ये वो कस्टमर थे जिनका प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है. तो ये वाले कस्टमर तो उसमें आए नहीं, सिर्फ वो कस्टमर आ रहे हैं जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है बट प्रॉफिट 4,000 से कम है. राइट, और इसी चीज के अंदर अगर मैं अपना लास्ट ऑप्शन यूज कर लूंगा, कंबाइंड सेट के अंदर लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा वो कस्टमर जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है. राइट, और सॉरी जिनका प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है बट सेल 10,000 से कम है. क्या कोई ऐसा कस्टमर है मेरे पास जिसका प्रॉफिट तो 4,000 से ज्यादा हो बट सेल 10,000 से कम हो? कोई है ऐसा कस्टमर मेरे डेटा में? One customer. So which one is that? जिसका प्रॉफिट 4,000 से ऊपर, तो 4,000 से ऊपर वाले ये हैं सारे. राइट, और इन सब की सेल अगर मैं देखता हूँ तो 10,000 से ज्यादा आ रही है. व्हाट आई सी राइट नाउ ऑन माय चार्ट. ओके, सो लेट मी सी इट, अप्लाई एंड ओके. तो मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर है ही नहीं जिसका बेसिकली प्रॉफिट 4,000 से ज्यादा हो बट सेल उसकी 10,000 से कम हो. ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे पास. राइट, सो मोहसिन, आई थिंक नाउ ओवर हियर यू विल गेट योर आंसर आल्सो. जो हम कंबाइंड सेट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, जो हमने कंबाइंड सेट क्रिएट किया है यहाँ पे, एडिट. तो आपने जहाँ प्रॉफिट वाला कंडीशन डाला था उसके अंदर प्रॉफिट की जो कंडीशन डालोगे आप उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो. सो यू विल गेट दैट आंसर.
तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आपको सिर्फ क्या करोगे, आप इनर जॉइन क्रिएट करोगे, आपको सिर्फ वो डेटा देखना है जहां पे सेल तो 10,000 से ज्यादा थी और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, जिसने ऊपर दिया आपको नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। सो यू विल से प्रॉफिट शुड बी मोर देन 0। तो अब देखो आपका वही सेम आउटपुट निकल कर आ जाएगा जो आप बोल रहे थे। हटके वो बोले दोनों नीचे वाले शॉन मिलर और बैकी, नाउ दे आर नॉट कमिंग ओवर हियर, सो वी हैव रीच्ड दैट आउटपुट। Okay, so this is what we have in this, right? The group and set. So these are the topics that we have in the Tableau also, right? So these are the things that we will be covering up in this Tableau sessions. So there's just one last thing. I will just take 5 more minutes from you. In this topic over here, what you can also do is आप अपने, हमने जो मैं आपको पैरामीटर्स बताया था ना, मैंने आपको पैरामीटर्स के मैं 2 यूज केसेस बता चुका हूँ। एक हमने पैरामीटर फिक्स किया था किसमें, अपने बिन्स के अंदर, राइट? बिन के अंदर हमने पैरामीटर लगाया था, तो हम पैरामीटर चेंज कर रहे थे तो बिन चेंज हो रहा था। फिर हमने उसका सेकेंड एग्जाम्पल देखा था, पैरामीटर का फिल्टर में लगाया उसको। जब पैरामीटर को हमने फिल्टर में लगाया तो जब आप अपना पैरामीटर चेंज कर रहे हो तो आपका फिल्टर चेंज हो रहा है। सेम वे आप अपने सेट को और अपने पैरामीटर को सेट में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कंडीशन फिक्स कर रखी है कि आपको वही डेटा देखना है जहां पे सेल 10,000 से ज्यादा हो, बट यू कैन मेक दिस नंबर जो 10,000 कस्टमर डेटा दे रहा है, आप उसको यूजर कंट्रोल कर सकते हो कि उसको वो कस्टमर देखने हैं कि जिनकी सेल 10,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है, 7,000 से ज्यादा है, 8,000 से ज्यादा है, ही कैन चेंज दैट नंबर बाय हिमसेल्फ। तो आप अपना पैरामीटर यहाँ पर भी फिक्स कर सकते हो। तो कैसे फिक्स होगा, सेम 3 स्टेप होंगे आपके। पहले पैरामीटर क्रिएट करोगे, सो लेट मी क्रिएट द पैरामीटर। इस पैरामीटर को मैं दे देता हूँ नाम चेंज सेल्स। ओके, इसको हम रखेंगे इंटीजर। हम इसमें देते हैं एक रेंज, अ पर्सन कैन एंटर अ वैल्यू फ्रॉम से सपोज 3,000 से लेके अ पर्सन कैन एंटर अ वैल्यू अप टिल 10,000, और 10,000 ही 20,000 रख लेते हैं, 20,000। और स्टेप साइज रखते हैं 1,000 का, कि वो डाल सकता है 3,000, 4,000, 5,000 लाइक वाइज। माई सेट दिस पैरामीटर इज क्रिएटेड। पहला स्टेप हो गया मेरा। सेकेंड स्टेप होता है शो द पैरामीटर। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, शो पैरामीटर किया, पैरामीटर मुझे दिख रहा है, बट अभी मैं इसको करूंगा तो मुझे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पे, क्योंकि मैंने इसको असाइन नहीं किया है। तो असाइन कहाँ पे होगा, ये इस सेट में। तो आई विल एडिट द सेट। अब देखो, जब सेट में आपको पैरामीटर लगाना होता है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नहीं मिलेगा। जैसे फिल्टर के केस में, बिन के केस में हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा था, तो हम सीधा ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट कर लेते थे कि बॉस हमारा चेंज सेल्स वाला पैरामीटर सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है जो आप लोग ऊपर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हो। यू विल से यू वांट टू सी दैट डेटा वेयर सम ऑफ योर सेल्स, राइट, आपकी सम ऑफ सेल्स इज मोर देन जो भी आपने इस पैरामीटर में सिलेक्ट किया है। पैरामीटर का नाम है चेंज सेल्स, उस पैरामीटर का नाम डाल दो, दैट्स इट। तो आप इसको अप्लाई एंड ओके करोगे। अगर आप अपने पैरामीटर में वैल्यू चेंज करोगे तो देखो आपका चार्ट चेंज होगा। अब यूजर अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकता है कि उसको कौन सा डेटा देखना है और कौन सा नहीं देखना। सो दैट इज व्हाट वी हैव। तो आप यही पैरामीटर प्रॉफिट पे भी लगा सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना, तो यूजर अपने हिसाब से चेंज करता रहेगा और अपने डेटा को मैनिपुलेट करता रहेगा। ओके, सो आई कैन शो यू इट अगेन। मैंने क्या किया, सेल्स वाले पैरामीटर पे एडिट कर रहा हूँ। मैंने पैरामीटर क्रिएट किया, शो किया उसको, और उसके अंदर नीचे जाके बस ये सिंपल फॉर्मूला लगा दिया कि मुझे वो डेटा देखना है जहाँ पे सम ऑफ सेल मेरी ज्यादा है किससे, जो भी मैंने वैल्यू अपने पैरामीटर में सिलेक्ट किया है।
Sir, can you show what parameters have you set in change sales once? वो सिर्फ एक लिस्ट बनाई है हम, रेंज बनाई है हमने. So change sales. So what I did was I selected the value as integer और मैंने नीचे Okay. range select कर दी. Range, a person can enter a value from 3,000 to 20,000. Got it. Got it. Got it, sir. Thank you. And step size of 1,000. Okay, class. So with this, we come to an end on this Tableau as well, right? So we have closed the things on the Tableau. We have done the things on the SAS. Your R, Python is already done any which ways, right? So now it's time will be for your projects, right? You all will be working on your projects. That will be your group activity. जहाँ पे आपको क्या करना होगा, basically what you all will have to do is you will have to create a group of yours. You can make a group of 3 to 4 people, and a project will be shared. One project for Python and one will be for the R. So in your group, you can decide on which project will you like to work on. Will you like to work on a R project or will you like to work on a Python project? And you will have 2 to 3 weeks of time in order to work on that project. So class, just give me 1 second. Hello. Yeah, so so the project links will be shared with you. One project will be of Python, one will be on R. So you can create your groups. If you want to work independently, you can work independently as well. Not a problem in that, right? So you all will have to work on that project by yourself independently, and you will have to create that entire project, create the solution, और उसको पूरा उसका एक proper आपको PPT में उसको presentation देना होगा, right? So you will have to create that entire stuff जो भी आपने किया है, जो भी आपका EDA था, जो सा आपने select किया. Someone is on unmute. So you will have to decide each and everything, and you will have to present that in a very, very suitable format. कि basically what you achieved, पूरा EDA के steps, पूरा आपका modeling का step, आपके जो भी charts आपने create किए हैं, उसकी एक explanation, what that chart is. So that is all you have to show. So Aman, you are saying your Python is pending. I mean, how much things are pending in that? So actually the thing is in Python wise the thing was कि हमारे मतलब राहुल सर हमारी क्लासेस लेते जिसमें वो प्रोजेक्ट्स करवाते हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स. हाँ. सो दैट वाज द थिंग. मतलब हमने दामिनी से भी ये चीज डिस्कस की थी कि मतलब दो होंगे कंटिन्यूस डेटा के, दो डिस्क्रीट डेटा के. मतलब हाँ, but that thing is still pending, sir, because we haven't done a class जिसमें हमें step by step कराया गया हो any data set. So that thing is still pending, and we have drop a mail to Damini and everything. मतलब डेटा स्टेप बाय स्टेप. आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई मीन डेफिनेटली आपने बात हुई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. जैसे आपके आर में जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट किया होगा प्रोडक्ट हाउस प्रेडिक्शंस का, करेक्ट? यस सर. मतलब जैसे एक पूरा नहीं, हाउस प्रेडिक्शन हमें नहीं कराया गया है आर में. हाउस प्रेडिक्शन नहीं किया. और आप आर में कौन सा किया था आप लोगों ने प्रोजेक्ट? सर हमने वाइन हार्ट टाइटैनिक. वाइन हार्ट और टाइटैनिक. ओके, एक्चुअली वो ओके ओके. तो मतलब वैसे ही, क्योंकि जनरली ऐसे ही चलता है कि जैसे आपका हर क्लास पे जैसे हर एक टॉपिक का एक प्रोजेक्ट होता है आपके पास, कि आपने पहले लीनियर रिग्रेशन किया तो उसका एक प्रोजेक्ट, फिर
लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसका एक प्रोजेक्ट, फिर डिसीजन ट्रीज का एक प्रोजेक्ट, फिर एक प्रोजेक्ट आपका फाइनली उसका एलडीए का। आई मीन फिर So आपने ये शायद मे that बी yes, so that is the thing that मतलब जैसे ये चीज जैसे प्रोग्रेस हुई तो जैसे यही चीज होती है ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, वी लोड डेटा, वी सॉर्ट थ्रू द डेटा, फिर हम ईडीए करते हैं, देन फिल्टर आउट करेक्ट। करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी डू अ एमएल एंड वी सी अ रिजल्ट, एंड फिर आगे जो चीजें की जाती हैं एंड वी फाइनली गेट टू अ रिजल्ट। तो दैट स्टेप बाय स्टेप थिंग जो वो होना चाहिए था, दैट वो चीज नहीं हुई हमारी। So that has been something which we have been talking to Damini and even to Alok sir. We have already communicated this, but we have been told that Rahul sir's father is not well, so that thing is pending. So that's why we are because that अगर वो ही चीज नहीं होगी कि step by step what we actually have to do, तो then बिकॉज हमें क्या कराएगा, हमें एक सिंगल एक एमएल करा दी गई, उसका कोड लिखवा दिया गया कि एसवीएम है, टाइम सीरीज है, वो चीज करा दी गई, बट एक वो स्टेप बाय स्टेप वाला जो चीज था वो नहीं हुई हमारी। ओके, मतलब आर में आपका सही हो गया था पूरा, बस पाइथन में पेंडिंग रह गया है वो, यस सर, राइट? पाइथन इज पेंडिंग, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो एक बार आप ये चीज, बिकॉज आई मीन एज पर मी व्हाट आई डू इज, जब हमारा टैबलू क्लोज होता है तो वी जस्ट डिलीवर दी गिव दी प्रोजेक्ट्स ऑन विच द टीम, आई मीन ऑल ऑफ यू हैव टू वर्क इन। सो आप एक बार इस चीज के लिए एक बार कम्युनिकेट कर लेना बेसिकली दामिनी से, सो डेफिनेटली शी विल हेल्प यू आउट इन दैट, और आपके सेशंस वगैरह अलाइन हो ही जाएंगे। तो उनको बता देना कि आपका टैबलू भी वी हैव डन इट, सो बिकॉज यू ऑल की मैंने जैसे प्रोजेक्ट्स की आपसे डिस्कशन किया, सो मे बी व्हाट वी कैन ऑल डू राइट नाउ इज फ्रॉम माय साइड व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि आप लोग अपने डाउट्स कलेक्ट कर लो, अगर आपके कुछ एसक्यूएल के, कुछ आपके टैबलू के कुछ डाउट्स हैं, राइट? सर सो यस सर, SQL in SQL we wanted you to, if that you take a class on SQL, that's what you wanted actually. हाँ, नो प्रॉब्लम। तो एक सेशन में आपका मतलब नेक्स्ट वीक एक हम अलाइन कर लेंगे एसक्यूएल के ऊपर। सो एंड सर विल अगर डू दैट। इफ इट्स पॉसिबल टू गेट अ, मतलब एक तो आपने सर सास में जो था हमें वो कराया, मतलब कि रिपोर्टिंग पार्ट, सो मतलब मोर देन कैन वी हैव अ सेशन जिसमें ज्यादा मतलब लाइक एनालिसिस वाला पार्ट भी आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए इन सास। That is something that I'll have to discuss with the team, because I can do it, but I mean, I'm articles, they actually stick to that syllabus, because Sir, as we far as know, sir, we know, sir, we know. But the thing is that again, say yes, you please take up. But the thing is, ki, we are struggling somewhere, so that's why we are asking. okay, sure, I'll do that. I'll just talk to them. So Aman, you want to see the SQL data integration with Tableau? See, SQL integration with Tableau is just one single step. See, आप लोगों के पास SQL server है, right? Let me just show you one quickly. I mean, I'll not take a lot of time, because आपके पास अभी पूरा वीक रहेगा, so you can all actually work on that. तो ये आपका SQL इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, वो आपका उसमें नहीं मिलेगा आपको पब्लिक में। ओके, सो इट्स अ वन सिंगल स्टेप, जैसे आप एक्सेल से कनेक्ट करते हो वैसे ही आप SQL सर्वर से कनेक्ट करते हो इसमें। सो व्हाट आई विल डू इज, ये मैंने टैबलू पब्लिक और टैबलू लाइसेंस सॉफ्टवेयर खोला अपना। आई विल फाइंड एन ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इस पे आप क्लिक करो। सिर्फ आपको अपने डेटाबेस सर्वर का नाम डालना है जो आप अपने मैनेजमेंट स्टूडियो में डालते हो, .SQL एक्सप्रेस। क्लिक ऑन साइन इन, और ये आपको सारे के सारे डेटाबेसेस आपके SQL सर्वर के यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो IBM जो भी आपके हमारे सेशंस बनाए हुए हैं हम लोगों ने, जितने भी डेटाबेस थे, सो यू विल सी ऑल ऑफ द डेटाबेस कमिंग ओवर है। आप जो भी डेटाबेस सिलेक्ट करोगे यहाँ से, उस डेटाबेस में जितने भी टेबल होंगे आपके, वो सारे टेबल आ जाएंगे, और उसके बाद जो डेटा आपको जैसे यूज करना है, यू कैन यूज इट। अब देखो ये डेटा आ गया मेरे पास, मैंने ऑर्डर्स का डेटा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देयर इट इज। अब आप अपना जो ये सेम डेटा है जो मैंने एक्सेल में था, वही डेटा मेरा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। आई कैन मेक माई चार्ट्स ओवर है, राइट द सेम वे, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड तो ये आपका इंटीग्रेशन SQL से हो गया, राइट? So this is all is for what statement? Sorry, I'm not able to get it.
So you are asking, I mean, you want to have this kind of a project, right? यहाँ पे you want you do the complete analysis in the R, then manipulation and feature engineering. See, basically क्या होता है ना, देखो आप if you just try, definitely you can do it, और actually में ऐसा ही होता है, right? आप जब भी किसी उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, so what will happen is you will always work in that same fashion only. So basically what we do in that case is, say suppose you have your data with you, so basically what we do is, जो आप EDA का प्रोसेस करते हो अपना, right? So the EDA process that we do is, that is something आप उसको टैब्लू में कर सकते हो अपना, करेक्ट? तो रेदर देन आप उस चार्ट्स को आप उसमें क्रिएट करो, दैट द आई मीन उसको आप आर में क्रिएट करो, यू कैन क्रिएट दोस चार्ट्स राइट अवे इन द टैब्लू एज वेल, और आप उसको एक डैशबोर्ड की फॉर्मेट में दिखा सकते हो. दैट इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो ऑन दैट. ओके, आई मीन सी आप क्या होगा ना, बेसिकली इट्स लाइक चीजें आप लोगों ने सारी की हैं, राइट? व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आप लोगों ने चीजें सारी की हैं. इट इज जस्ट दैट you are not able to summarize all the things together, right? आप लोगों ने सारी मॉडलिंग आपने आर में करी है, राइट? आप लोगों ने सब चीजें पाइथन में भी सीखी हैं, और चीजें कहीं पे भी डिफरेंट नहीं है. जो फ्लो आपका आर में है वही पाइथन में होता है, राइट? आप जैसे अपने कोर्स को आर में लिखोगे, वही सेम स्टेप आप पहले ईडीए करोगे, फिर उसको टेस्ट एंड ट्रेन में ब्रेक करोगे, और फिर उसके ऊपर मॉडल क्रिएट करोगे. तो स्टेप्स तो आपके सेम ही रहेंगे, चाहे आप आर में करो चाहे पाइथन में करो. दे आर जस्ट द टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. बाकी तो सारा काम सेम ही है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो टेक्निकली तो आप लोगों ने सब चीजें की हैं. इफ यू आस्क मी, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, बिकॉज द कोर्स पैटर्न एंड एवरीथिंग इज एवरीवेयर सेम, मतलब सारे बैचेस में. सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ डन. सो समीर, आई विल शेयर द लिंक्स फॉर द प्रोजेक्ट्स. ओके, आपका आर का और एक पाइथन का, आई विल शेयर द लिंक. सो यू गाइस हैव टू चूज वन, कि आपको आर में पिक करना है या पाइथन में पिक करना है. देन यू हैव टू फर्स्ट डू द कंप्लीट एनालिसिस. See, I'll show you something. I can show अभी शायद अभी नहीं होगा मेरे पास, ये आप किस तरीके से पीपीटी में उसको डालते हो. बेसिकली यू नो एक्चुअली आई जस्ट यू कैन बट मैंने दूसरे सिस्टम में रखा हुआ है. आई वुड हैव शोन यू कि पीपीटी का एग्जांपल, बट नॉट अ वरी. राइट नाउ यू हैव टू गो बाय द सेम कॉन्सेप्ट, कि पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव डाल दोगे उसके अंदर, देन यू विल put down all the steps कि क्या डेटा क्लीनिंग करनी पड़ी आपको और क्या सब चीजें करनी पड़ी. You will just mention all those things over there. So we have, yeah, so there will be two projects, okay, one on R and one on Python. So you can pick any one of them. अगर आपको दोनों पे करना है तो you can do work on both of them also, right? For your own sake, practice on sake. अगर आपको डिस्कस करना है कि हाँ आपने इन सब चीजों पे काम किया है, you have to discuss it, you can work on two of them as well. So links, data and everything, so we'll share it over the mail so that you can easily access them and work upon them. Okay, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल ही रही होंगी ना विषय. रिकॉर्डिंग्स तो सारी आपके पास जो YouTube पे आपको मिलती होंगी रिकॉर्डिंग्स, तो सारी ऑलरेडी सारी हैं ही आपके पास. सर एक्चुअली नवंबर की कोई भी शेयर नहीं हुई है. तो आप दामिनी मैम से कनेक्ट कर लेना, शी विल हेल्प यू आउट. सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज. रिकॉर्डिंग क्योंकि सारे सेशन रिकॉर्डेड हैं, यहाँ पे कोई भी सेशन ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. सो रिकॉर्डिंग सारे सेशंस की है. ओके गाइस, सो यू कैन कलेक्ट इट आउट. सो प्लीज, मैंने आपको असाइनमेंट्स ऑलरेडी बता रखा है. टैबलू के असाइनमेंट्स आपके पास गूगल ड्राइव पे हैं. सो पिक अप दोस सर जस्ट असाइनमेंट्स. yes sir, please continue. Sorry, please continue. So you can pick up your assignments from there. You can practice, और आपको कुछ doubts हैं, just collect them, and then you can I mean collect and you can just ask here, and definitely I'll help you out over there. So Sameer, you will get 2 to 3 weeks of time. So that is what it is. I mean जितना जल्दी आप कर सकते हो, that is good, right? So then once all the people will do it, तो उसके बाद हम लोग एक session align करेंगे जिसमें आप सब लोग एक एक करके प्रेजेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट्स को कि आपने क्या किया है और आपकी क्या फाइंडिंग्स थी. और उसमें आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एज वेल, सो एज टू जस्ट गिव इट अ मोर लाइक अ इंटरव्यू फील.
कि आपको ताकि थोड़ा एक्सपोजर मिले कि इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड हाउ यू हैव टू आंसर देम. सो ऑल दोस थिंग्स विल बी गाइडेड टू यू. ओके. फेस टू फेस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर आई गेस आप मोस्ट ऑफ यू वुड बी एट योर होम टाउन. अगर आप लोग हैं अवेलेबल इन दिल्ली, so definitely we can have it face to face as well, but this is something again, we'll have to check with Damini ma'am so that we can get a clear picture on this. But हाँ, अगर आप लोग हो गए दिल्ली में तो face to face हो सकता है, because एनिमेशन क्लासेस कमेंस होना स्टार्ट हो गई हैं उसमें. But they will prefer that. Not a problem. See, definitely we are there to help. So if you will require it, so if it will be feasible, आप सब लोग आ सकते हो. So most welcome, right? So this way we will meet also in person, face to face. Okay, yeah. So Mohsin, you were asking something. So yes, just one thing कि हमें एक प्रोजेक्ट करना है, राइट? मतलब हाँ. either we can do, मतलब या तो एक प्रोजेक्ट कर लें, और अगर दो करते हैं तो we have to do one in R and one in Python instead of doing both in Python. See, I will. देखो, मुझे सिर्फ ग्रेडिंग करनी होगी आप लोगों की. वी जस्ट वांट टू सी कि आप लोगों की कैसी लर्निंग्स हुई है, राइट? तो आप अपना जो आपने बेस्ट किया होगा, आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, राइट? तो मैं उसके ऊपर आपको जज कर लूंगा कि ठीक है, आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, किस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया है. सो दैट विल गिव मी एन आइडिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन गिव यू द ग्रेड्स, राइट? और So जो we have to सेकंड create a प्रोजेक्ट होगा, हाँ, जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो आपका सेल्फ प्रैक्टिस का है, तो आप उसमें वर्क कर सकते हो. एंड यू कैन एनी टाइम कनेक्ट कि हाँ, हमें इसमें कुछ डाउट्स हैं, या यू वुड लाइक मी टू रिव्यू इट, कि उसमें कुछ फीडबैक्स या कुछ सजेशंस मैं दे सकता हूँ अपने. तो वी कैन टेक इट दैट वे ऑन द अदर प्रोजेक्ट, राइट? Okay, sir. So basically, we have to, make a PPT of it. What we have found in the project, right? करेक्ट. जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसमें क्या मॉडल की इक्वेशन निकल कर आई, क्या आपके कोफिशिएंट्स निकल कर आए, वो सारे आपको अपने मॉडल में प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डालने हैं. Okay, sir. I hope all the questions are answered. Okay, so great, guys. So thank you for the session today, and definitely, so now start working on all the things, and definitely, so I will share the link of the projects with you so that you can start working on them as well. Okay, thank you, guys, and take care. Yes, sir. Bye bye.